अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आइडियल गैस इक्वेशन। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट। जनरल गैस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज आइडियल गैस कांस्टेंट। It is also known as universal gas constant. It is also known as molar gas constant, and its value is independent of nature of gas. In other words, value of R is same for all ideal gases. Last time हमने इक्वेशन डिराइव की थी PV is equal to nRT. This equation is known as ideal gas equation. In this equation, P represents the pressure, V volume, and number of moles. R general gas constant, T is temperature. For ideal gases, at all temperature and pressure, the product of pressure and volume is always equal to product of number of moles, R, and temperature. For non-ideal gases, this relation is not correct. This relation is correct only for ideal gases. So if we divide number of moles and temperature on both sides, so R will be equal to PV over NT. So we can derive the value of R if we know the value of pressure, volume, number of moles, and temperature. And these values can be derived by using the Avogadro law, Avogadro principle, as we have discussed in chapter number 1. 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupy volume of 22.414 decimeter cube. So by using this principle, we can derive the value of R. And if there is 1 mole of gas, N is equal to 1 mole at standard temperature and pressure. Standard temperature is 0 degree centigrade, या केल्विन में इट इज़ इक्वल टू 273 केल्विन, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अंडर दीज कंडीशंस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 22.414 decimeter cube. If we put these values in ideal gas equation, we can derive the value of R. R will be equal to PV over NT. P pressure, which is equal to 1 atmosphere, multiplied by V volume, and volume is equal to 22.414 decimeter cube, divided by NT. N is the number of moles, which is equal to 1 mole, multiplied with temperature, which is equal to 273 Kelvin. Temperature should be expressed in Kelvin scale, as we have discussed in Charles' law. Charles' law is only applicable when temperature is expressed in Kelvin. It is not correct for Celsius scale. So we should put the value of temperature in Kelvin in ideal gas equation, in gas laws, etc. So by simplifying these values, R is equal to 0.0821 atmosphere decimeter cube per Kelvin per mole. It is the value of R when pressure is expressed in atmosphere and volume is expressed in decimeter cube. Here atmosphere decimeter cube is the unit of energy. As we know कि R is equal to PV over NT. P is pressure, and pressure is equal to force per unit area. Pressure is force per unit area multiplied by volume. Volume is equal to area multiplied by length divided by mole
इंटू केल्विन। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई मोल मल्टीप्लाइड बाई केल्विन, एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, यानी इट इज इक्वल टू वर्क, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वर्क या एनर्जी पर मोल पर केल्विन। सो एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, if we have to increase the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin, we have to provide 0.0821 atmosphere decimeter cube energy to ideal gas. In case of ideal gas, if there is 1 mole of ideal gas, and if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 1 Kelvin, so we have to provide energy 0.0821 atmosphere decimeter cube. If we have to increase the temperature of 1 mole of gas through 10 Kelvin, we should provide the energy 10 times greater than this. And if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 10 Kelvin, then amount of energy required is 0.821 atmosphere decimeter cube. If we have to increase the temperature of 1 mole of an ideal gas through 100 Kelvin, then 8.21 atmosphere decimeter cube energy is required. Then 100 times more energy is required than this energy. It is true for ideal gas. If we have non-ideal gas, for example, if we have 1 mole of non-ideal gas, non-ideal gas के 1 मोल का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड शुड बी ग्रेटर देन 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अब आइडियल गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए 0.081 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब एनर्जी चाहिए, लेकिन 1 मोल नॉन आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन 0.081 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। देन व्हाई, ऐसा क्यों है? आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं विच हैव नेग्लिजिबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, विच हैज नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एंड नॉन आइडियल गैस हैज सिग्निफिकेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ जो हम एनर्जी देंगे आइडियल गैस को, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ओनली, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल गैस द एनर्जी प्रोवाइडेड, the some part of this energy provided is used to break the intermolecular forces, and some part is used to increase the kinetic energy of molecule. So some amount of energy is used to overcome the intermolecular forces, so there is greater amount of energy required to raise the temperature of 1 mole of ideal gas through 1 Kelvin. And the numerical value of R depends upon the unit of pressure and volume. By changing the unit of pressure and volume, the numerical value of R is changed. For example, in this value, the pressure is measured in atmosphere. As we have discussed in previous lectures, pressure is measured in different units: millimeter of mercury, tar, bar, millibar, Pascal, kilopascal, Newton per meter square, etc. So if we express the pressure in tar in this case, तो ये रिलेशन हमने डिस्कस किया था, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टार। अगर इस 1 एटमॉस्फेयर को टार में कन्वर्ट करें तो इस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई कर दें तो R इज इक्वल टू 0.0821 क्रॉस 760 टार डेसीमीटर क्यूब
per Kelvin per mole. If we simplify it, तो R will be equal to 62.4 tar decimeter cube per Kelvin per mole. And if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 1 Kelvin, we have to provide 62.4 tar decimeter cube energy. इसी तरह if we express the pressure in mmHg, 1 tar is equal to 1 mmHg. तो R will be equal to 62.4 mmHg decimeter cube per Kelvin per mole. So to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 1 Kelvin, 62.4 mmHg decimeter cube energy is required. इसी तरह if we express the volume in centimeter cube, 1 decimeter cube is equal to 1000 centimeter cube. तो इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो R will be equal to 62.4 क्रॉस 1000 mmHg सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल. इसे सिंप्लीफाई करें तो R इज इक्वल टू 62,400 mmHg सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन per mole. And according to this value, if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 1 Kelvin, 62,400 mmHg centimeter cube energy should be provided. Similarly, if we express the pressure and volume in SI unit, तो we can derive the value of R in SI units. अगर हम इनकी SI units इस्तेमाल कर लें तो फिर हम R की वैल्यू SI units में डिराइव कर सकते हैं. ये SI units of pressure, volume, moles. N is the number of moles and mole is the SI unit for counting the particle of substance. SI unit of temperature is Kelvin and SI unit of pressure is Pascal or Newton per meter square, and 1 atmosphere is equal to 101,325 Newton per meter square, and the SI unit of volume is meter cube. So to convert decimeter cube into meter cube, divide this value by 1000. So it will be equal to 0.022414 meter cube. अब अगर ये SI units पुट कर दें in general gas equation, तो we can derive the value of R in SI units. R is equal to PV over NT. तो R is equal to P pressure which is equal to 101,325 Newton per meter square multiplied by volume 0.022414 meter cube divided by N number of moles which is equal to 1 mole multiplied by temperature 273 Kelvin. इसे सिंप्लीफाई करें तो R will be equal to 8.314 Newton meter per Kelvin per mole, and 1 Newton meter is equal to 1 joule. So we can write that R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. Joule is the unit of energy. So according to this value, if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 1 Kelvin, 8.314 joule energy is required. According to this value, if we have 1 mole of ideal gas
if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 1 Kelvin, then energy required is 8.314 joule. Similarly, if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 10 Kelvin, then 10 times greater energy is required. Then energy required is 83.14 joule energy is required. Similarly, if we increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 100 Kelvin, then 31.4 joule energy is required. And this amount of energy is required for ideal gas. If we have 1 mole of non-ideal gas, then energy required is greater than this. अगर 1 मोल नॉन आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन 8.314 जॉल. रीजन इज सेम कि इन केस ऑफ नॉन आइडियल गैस सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो फॉर नॉन आइडियल गैसेस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर एज कंपेयर टू आइडियल गैस. इसी तरह इफ वी use the unit of energy in calorie, 1 calorie is equal to 4.18 joule. तो अगर इस जाउल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लें तो R will be equal to 8.314 divided by 4.18 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. यानी R will be equal to 1.98 calorie per Kelvin per mole. According to this value, if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 1 Kelvin, तो 1.98 calorie energy is required. इस वैल्यू के मुताबिक if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 1 Kelvin, then energy required is equal to 1.98 calorie. इसी तरह if we have to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 10 Kelvin, then 19.8 calorie energy is required. यानी 1.98 calorie energy is equal to 8.314 joule, which is also equal to 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब. तो इस तरह ये फिजिकल मीनिंग ऑफ आर कैन बी एक्सप्लेन इन दिस वे कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आइडियल गैस. इट कैन बी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट. So it was about the ideal gas constant. Now we discuss the applications of ideal gas equation. Our next topic is applications of ideal gas equation. Ideal gas equation कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? Applications of ideal gas equation. As we have derived already, PV is equal to nRT. This equation is known as ideal gas equation. By using ideal gas equation, we can determine the mass of gas, molar mass of gas and density of gas. By using ideal gas equation, we can determine number 1 mass of gas, number 2 molar mass of gas, number 3 density of gas. For example, if we have to determine the mass of gas, according to ideal gas equation,
अगर हम मैथ मालूम करना चाहते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और वी हैव डिस्कस about the concept of mole in chapter number 1. Mole is equal to given mass divided by molar mass of substance. N is equal to given mass of substance divided by molar mass. Small m represent the given mass of gas in grams and capital M represent the molar mass of gas. If we put this value in ideal gas equation, so PV is equal to m over molar mass into RT. If we multiply molar mass on both sides, तो MPV is equal to MRT. If we divide RT on both sides, तो mass of gas is equal to MPV over RT. So by using this equation we can determine the mass of gas in gram. इसके लिए we have to know molar mass of gas, pressure, volume and temperature. R is constant for all gases. Similarly we can determine the molar mass of gas. According to this equation, अगर इस इक्वेशन में वी डिवाइड पी वी ऑन बोथ साइड, तो देन एम विल बी इक्वल टू एम आर टी ओवर पी वी. बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ गैस. फॉर दिस पर्पज वी शुड नो अबाउट मास ऑफ गैस, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. देन वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ गैस. Similarly, we can determine the density of gas. For example, according to ideal gas equation, ये PV is equal to mass over molar mass into RT. If we multiply molar mass on both sides and divide volume on both sides, then we get Pm is equal to m over v into RT. M is the mass, V is volume, and mass over volume is called density. The density is equal to mass per unit volume, m over v. Putting this value in above equation, we can write that Pm is equal to dRT. By dividing RT on both sides, we get density is equal to Pm over RT. By using this equation, we can determine the density of gas. For this purpose, we should know about pressure, molar mass and temperature. As we have studied, R is constant for all ideal gases, and molar mass of particular gas is also constant. So according to this relation, density is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature. इस रिलेशन के मुताबिक डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. को डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीजेज, और वॉल्यूम डिक्रीजेज तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. इसी तरह इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये रेशियो कम हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी. अगर हम किसी एक पार्टिकुलर गैस की डेंसिटी डिस्कस करें, फॉर पार्टिकुलर गैस अगर हम प्रेशर टेम्परेचर चेंज करेंगे, ये प्रेशर, और अगर हम डिफरेंट गैसेस को कंसीडर करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो फिर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द डेंसिटी ऑफ गैस is greater whose molar mass is greater.
For example, density of oxygen is greater than density of hydrogen at same temperature and pressure because the molar mass of oxygen is greater than molar mass of hydrogen gas. For a particular gas, density is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature. So these are the few applications of ideal gas equation. Allah Hafiz.